तो ये जो बहस है ना तहसीली वाली, वो यहाँ मत करो। घुमा फिरा करके ऐसे समझ में नहीं आता किस टाइप की बहस करते हैं आप। इतने सीनियर वकील होने के बावजूद हो गई बहस, और बहस करना है और रायता फैलाओ। नहीं वाई सॉरी, अभी यूनिवर्सिटी को नंगा करो ना। तो तुम भटकती आत्मा हो और या बेरोजगार हो और या तुम्हारे पास कोई काम धाम करने को नहीं है, दिस मैन शुड बी सेंट टू जेल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। विड्रॉ नहीं, आज कॉस्ट लगेगी इस पर, खाली कोर्ट में, बिकॉज आई एम गोइंग टू पनिश दिस मैन। विल नॉट हियर अस। अब तुम्हारी कलाई खुल रही है। नो लेक्चर प्लीज। नो वंडर वी मे सेंड दिस मैन टू जेल ऑल्सो। बुलाओ भाई। कहाँ है जयप्रकाश मिश्रा, क्या नाम है इनका? नहीं, जितेंद्र कुमार शर्मा, संकल्प शर्मा ने बुलाया था ना। इन द लाइट ऑफ द फैक्ट स्टेटेड हियर इन अबव, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरेक्ट द स्पॉट नंबर 1 टू डिसाइड द पेंडिंग रिप्रेजेंटेशन P1। हाँ P1 ये है। अच्छा एक मिनट, एक चीज और देख लें, इन दोनों में पिटिशनर्स कौन कौन है। ये KP सिंह एडवोकेट और कुशाल, उन्होंने क्या किया इस बार, ये नाम पूरा लिखा था पहले, कुशाल पाल सिंह सन ऑफ DP सिंह, और ये हैं ये भी KP सिंह एडवोकेट सन ऑफ DP सिंह, वही आदमी है। ये कौन आदमी है? इसको बोलो पीछे बैठे। ज़्यादा उत्सुकता हो तो भी भेजाएं जेल में इनको हम। ये बुलाते क्यों तुम लोगों को यहाँ पर हैं? क्या दिखाने के लिए बुलाते हो? नहीं, ये रोस्ट्रम जो होता है ये किसके लिए होता है? नहीं, मैंने सर बुलाया नहीं। ये वहाँ यहाँ ये बड़ी सेंसिटिव जगह है। यहाँ पे करंट चलता है, करंट। मैंने नहीं बुलाया सर। जो भी है लाइव स्ट्रीमिंग है, देखें यहाँ सीधा सर कोर्ट आप देख रहे हैं। जब वकील खड़ा है उनका, हमने तो बुलाया नहीं उसको। नहीं, मैंने नहीं बुलाया। Then why should he appear and create a problem for us? ये पहले वाली जो कोई काम दाम है नहीं, पहले वाली रिटायर्ड आदमी और बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, हाईकोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नॉनसेंस। पहले वाली जो पिटीशन है सर, इसमें क्या था, ग्रीवेंस ये रेज किया कि रिप्रेजेंटेशन हैज बीन सबमिटेड बिफोर द चांसलर। Such people should be dealt with sternly nowadays. Just a minute, Mr. Aggarwal जी, just a minute। ये पहली पिटीशन जो लगाई थी आपने, इसका आपने कहीं हवाला दिया है इसमें? नहीं दिया। नहीं बट दिया। उसमें केवल इतना ग्रीवेंस था कि माय रिप्रेजेंटेशन हैज नॉट बीन डिसाइडेड। अब जितना सवाल पूछ जवाब दो उसका पहले। सर बोलिए। एक, जिस रिप्रेजेंटेशन को आप डिसाइड कराना चाहते थे पहली पिटीशन में, उसका सब्जेक्ट मैटर और इस WP का सब्जेक्ट मैटर एक है? नहीं, इस WP का सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट। उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था? उसका सब्जेक्ट मैटर ये था कि माय रिप्रेजेंटेशन जो What was the representation? You read the representation. You read. डिसाइडेड बाय द कोर्ट। You read. No, I am asking you the content of your representation. Whether the content of your representation was same as subject matter of this petition or not. You make a statement, I will record it, because I am going to punish this man if I find something factually misgiving. सही है सर, लेकिन पहले का ऑर्डर तो दे। You please, Mr. Counsel. पहले का ऑर्डर तो दे। Are will you not hear us? Will you not answer our questions? You answer the question. First you see the content of your representation and subject matter WP are the same or not? Not entirely same. But there is difference between the two words. I am saying whether same or not. Don't use prefix entirely. Be frank. Blood be released claim। All right. You don't want to answer this question? सर मैं दे रहा हूँ। दीजिए, आप पढ़िए इसको पहले। आइए पेश होल्डर पे आइए, क्या लिखा है आपने इसमें? यही ना रिकमेंडेशन? P7 में एक मिनट, ये जो इनकी पहले की अभी जो पिटीशन है, एक मिनट, 72 पढ़िए।
No, as is of no consequence as the decision has been rendered thereupon by the office for number 1 and the decision has been communicated to petitioner by so and so so and so. 2/9/21 को हाँ अच्छा has he annexed this order of 2/9/21 नहीं किया? ये लिख दिया ईमानदारी से कि नहीं आपने वो ऑर्डर की कॉपी क्यों नहीं लगाई? कॉपी जरूर नहीं लगाई है, लेकिन मैंने उसमें लिखा कि मेरा रिप्रेजेंटेशन डिसअलाउ कर दिया। और उसके बाद में सर जो R1 कहाँ है? अच्छा, and this is not challenged. वो 95 पेज पे 95 क्या है उसमें? ये गवर्नर ने कहा कि साहब ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। मैंने तो कह दिया कि मेरा रिप्रेजेंटेशन तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन और लगा हुआ है उसका 95 पेज 95 ये चांसलर का एक तो आपका लेटर को उन्होंने रेफर किया है खाली? क्या लिखा है बताइए? हाँ सर रेफर किया, लेकिन फिर अल्टीमेटली ये कर दिया इन्होंने। जरा पढ़ो तो ज्यादा। हाँ कृपया विषयांतर का संदेश पत्र का अवलोकन करें। निर्देशानुसार लिए कि बीएससी नर्सिंग अंतिम वर्ष 2019 में गलत अंक सूची जारी करने संबंधी अनियमितता गंभीर स्वरूप की है। इसमें हुए भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। अतः माननीय कुलाधिपति के निर्देश दिए हैं कि बीएससी नर्सिंग अंतिम वर्ष 2019 की गलत अंक सूची जारी करने संबंधी घटना इसमें कराई गई है जांच विश्वविद्यालय स्तर पर की गई कार्रवाई एवं घटना की पुनरावृत्ति न हो की विस्तृत जानकारी कार्य परिषद में विचार एवं अग्रिम निर्णय रखी जाए। प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जाए। उपरोक्त उल्लेखित बिंदु के अलावा शेष बिंदुओं पर कार्य परिषद द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विषय को विधिवत चर्चा अवलोकन अनुमोदन निर्णय हेतु कार्य परिषद की अगली बैठक में रखा जाए। उपरोक्त प्रस्तावित कार्रवाई के पश्चात प्रश्नाधीन मामले में कार्य परिषद की बैठक में हुए निर्णय की कार्रवाई विवरण भी प्रति अपने अभिमत सहित शीघ्र भिजवाने क्या है इसमें क्या है? इसके बाद सर FIR दर्ज हो गई, लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी में मैटर कभी नहीं रखा गया और FIR में 2 साल होने के बाद भी आज तक कोई आदमी। अरे भाई तो इसके चांसलर ये हैं तो इनके पास आप जब कार्रवाई कर वो रहे तो हैं चांसलर ने तो सर कह दिया। अब ये इसके बाद मैं अभी बताता हूँ आपको, अभी देता हूँ ऑर्डर आपको। चांसलर ने कह दिया, अभी देता हूँ ऑर्डर आपको। EOW ने जांच कर लिया, EOW में भी जांच गई सर, लेकिन लोकायुक्त ने कर लिया। मतलब नहीं वो फालतू आदमी है, सड़क पे घूमता होगा, मुझे हाईकोर्ट चलते हैं। These persons should be dealt with sternly। अभी मैं ऑर्डर पास करता हूँ। हाँ 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 P1 R1 नहीं, हाँ 2 सितंबर 21 का है। हाँ ठीक है। हाँ मतलब 17 मार्च के बाद कार्रवाई हुई और उसके बाद उन्होंने 21 को समाप्त कर दिया। हाँ। और इसी के लिए आए थे यहाँ पर ये। पहले जो पिटीशन में आए पुलिस बेस पे आए, पिटीशनर नंबर 1 आया, पिटीशनर नंबर 2 नहीं आया। ये मुझे बताओ पहले कि 2 मार्च 21 पहले आता है कि 17 मार्च 21 पहले आता है? 2 मार्च 21 पहले आता है। उसकी तो सुनो, जब आपका 17 मार्च 21 के बाद जो आपने दिया रिप्रेजेंटेशन वो 2/9/21 को खारिज हो गया। उसके आधार पे आपने, उसके पहले आप WP में आए, कहा साहब मेरा रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग है, इसको डिसाइड कर दिया जाए। जब 2/9 को डिसाइड हो गया उसके बाद अब नई पिटीशन लगाते हो और 17 मार्च के आधार पे जाते हो। अब
नई पिटीशन तो केवल इसी बेस पे है कि और 17 मार्च का जो इशू था, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर रिप्रेजेंटेशन, जो पेंडिंग था, जिसको 2 सितंबर 21 को डिसाइड हो गया वो। अब आप 17 मार्च को फिर उठा रहे हो, तो लिखिए WP नंबर। पहले वाली इन्फ्रक्चर्स हुई है, पहले वाली पिटीशन तो इन्फ्रक्चर्स हुई है। इन्फ्रक्चर्स छोड़ दीजिए, वो हम लिखा रहे हैं ऑर्डर। WP नंबर केवल इसलिए है कि सर ये अभी लिखाता हूँ। WP नंबर ऑर्डर नहीं किया है 6। सर कोर्ट में कोर्ट के अभी कोर्ट सब जुडिस है मैटर, आपने सर हमारा बयान नहीं ले रहे थे, तब पेंडिंग है, तो अभी कैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे भाई? मजिस्ट्रेट मेरी कोई बयान नहीं ले रहा, 2 साल FIR होने के बाद भी। अब समझ में अब तुम्हारी कलाई खुल रही है। साहब के आगे तब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तुम यहाँ किस लिए आए हो पता है मुझे। अभी तक किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया, केवल इतना सा इशू। नो लेक्चर प्लीज, नो लेक्चर प्लीज। You have pleaded, we have heard you, and we have found that though your WP is not bona fide, you are a busybody. At the instance, some interested persons are trying to create or pollute the atmosphere of the university, and you should be dealt with sternly by us today. WP, your conduct and demeanor and your past record suggest that you are a person who has come here with ulterior motives. WP number 11164 of 23. No wonder we may sometimes send this man to jail also. No, you are misusing the process today. We have seen the record. We have seen both the record. अब आप कुछ भी कहते रहिए आप। मेरी एक बात सुनता है। हाँ समझाइए ना आप, कौन मना कर रहा है आपको? जो पिटीशन फाइल हुई वो केवल इसलिए हुई कि गवर्नर इज नॉट डिसाइडिंग माय रिप्रेजेंटेशन। दैट पिटीशन बिकम इन्फेक्शियस, that have been dismissed as infectious because the governor decided the representation। अब इसमें सर दूसरा भी पिटिशनर है, ये भी है, इन्होंने एक ग्रीवेंस ये रेज किया कि साहब ये 318 मार्कशीट फर्जी तरीके से जारी कर दी, और उस इशू पे गवर्नर ने माना कि क्या वो ये जो बहस है ना तहसीली वाली, वो यहाँ मत करो भाई, क्या बोल रहे यानी वो घुमा फिरा करके गवर्नर ने ऑर्डर कर दिया, गवर्नर ने कौन सा ऑर्डर कर दिया भाई? अरे समझ में नहीं आता किस टाइप की बहस करते हैं आप, इतने सीनियर वकील होने के बावजूद। आपका लेटर उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया इंक्वायरी के लिए कि कार्य परिषद सामने रखा जाए, दैट्स ऑल। उसके बाद आज तक कार्य परिषद नहीं बुलाई। तो फिर चांसलर है, गवर्नर के पास जाइए ना। मुझे पता है आपको क्या इंटरेस्ट है आपका। हो गई बहस हो गई, और करना है, और बहस करना है, और बहस करना है, और आता फैलाओ। सॉरी सर। नहीं वाई सॉरी, अभी यूनिवर्सिटी को नंगा करो ना, क्योंकि तुम्हारी क्योंकि तुम या तो तुम भटकती आत्मा हो, और या बेरोजगार हो, उनकी जांच रिपोर्ट, और या तुम्हारे पास कोई काम धाम करने को नहीं है, तो ऊट पटांग तरीके से मिस्चीवियस वे पे WP लगाई है, मिस्चीवियस वे में। उनको काम करने दीजिए, मतलब खाली दिस मैन शुड बी सेंट टू जेल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है सर। सारे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ इस तरह से लगाएंगे, इंस्टीट्यूशंस विड्रॉ नहीं, आज कॉस्ट लगेगी इस पर, खाली कोर्ट में मतलब आपका जवाब देते रहे। वी विल इम्पोज कॉस्ट, यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है, वी विल इम्पोज कॉस्ट। WP 11164 of 23. Petitioner number 1, KP Singh, who styles himself an advocate, and KP Singh, son of DP Singh, aged about 72 years, and styles himself as advocate, along with one Anup Aggarwal, who is a businessman, are before this court in the form of pro bono publico writ petition seeking indulgence in the form of direction to conduct a CBI inquiry, to order for CBI inquiry in the matter of examinations conducted by the university, respondent number 2, for कौन सी क्लास का है?
BSc Nursing of the year 2019 for the academic year 19, 18-19, 18-19. Full stop. Shri Raghuvanshi, senior advocate and an advance notice, along with Nirankari, on advance notice, points out that petitioner number 1 had approached this court earlier seeking indulgence in the matter of consideration of his representation. By the Kulpati, wherein similar allegations were made in a most evasive, similar allegations were made क्या सिमिलर पिटिशन वाज फाइल्ड ना चलेगा ना नहीं उसके ऊपर क्या लिखा आपने उग्राधिपति रिप्रेजेंटेशन डेटेड तीस 3/2/21 filing WP number 6926 of 21. Full stop. The representation was already decided. Full stop. During pendency of the WP, representation, ऐसा करिए. The representation was since already decided on 2/9/21. This court closed the writ petition on 14/2/22 as infructuous. Next. Shrivanshi further submits that by adding one businessman as a petitioner, petitioner K.P. Singh has now again approached this court for the same nature of relief, which were for raising same questions, issues which were mentioned in the earlier representation. Without disclosing the fact that earlier, the fact of filing of writ petition number 6926 of 21 and its disposal on 14/2/22. That apart, it further appears petitioner had filed some other representation it further appears that petitioner had earlier filed a representation. ये किस तारीख का है ये वाला? नहीं इसमें ये देखो ना जो R11 है, R11 है ना, ये KP सिंह को एड्रेस्ड है. वो था 13/3/21 का, 13/3 को ना. नहीं ये जो R11 है ये है 2 सितंबर 21 का है. हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको. उसमें लिखा है आपका अभ्यावेदन 3/2/21 इससे ना. मुझे ये बता दो जो R1 था, जो P7 का डेट क्या है? सेम. अच्छा क्या लिखा आपने?
नहीं नहीं काट दो इसको, उसके बारे क्या लिखा पढ़ना? Again, up to this quote. In the context of the same representation, in the context of the subject matter of representation, dated 3/2/21, which 3/2/21 नहीं ये हाँ 3/2/21, which has already been decided on 2/9/21. Neither has he mentioned the writ petition number earlier filed, nor the petitioner has not disclosed the fact of earlier writ petition number so and so and the disposal and ordered so and so disposing of the petition. ये पहली बार आ रहा है ना? Further, petitioner वो जो 17 मार्च वाला ऑर्डर है कौन सा है? हाँ हाँ 18/21 To further bolster his submission, Shrivanshi refers to. Therefore, for concealment of fact, relevant fact, for concealment of fact, this petition deserves to be dismissed. ये उसको अभी रुक जाओ, उसको भी मत देखो, ये हो गया ना? To bolster his submission, Shri Raghuvanshi refers to contents of para 3.9 of the writ petition. The same is quoted below. He submits that a bare reading of the said pleading, it suggests that the Chancellor of the University under Section 13 within bracket 4 has opined that there has been big corruption in the alleged scam and false mark sheet have been issued, which is a serious financial irregularities. Therefore, FIR should be registered, but the representation made by the petitioner number 1 under 13(4) of the Adhiniyam was disallowed. In other words, on the one hand, the petitioner tried to impress upon the court that Kuladhipati had opined about the aforesaid allegations, and again and further that the representation was disallowed. Whereas the decision of the Kuladhipati on 2/9/21 neither
does not speak of what is pleaded in the WP as well evident from the document which is on कौन सा document R11 in WP number 6926 of 21. Full stop. और डाल दीजिएगा तो इसमें लिखिए petitioner has purposely not enclosed the decision of the Kuladipati of 2921 in this petition. As such, the petitioner is not only guilty of suppression of fact, but also has indulged in an activity of distortion of facts with malafide intention to mislead this court through the instant PIL. Full stop. Shri Raghuvanshi further submits that as a matter of fact, the petitioner has tried to, has approached this court. ये 17 मार्च 21 का क्या है ये? Full stop. Further submits that now mischievously petitioner has enclosed an internal correspondence between the Governor and the Kulpati dated 17th March 21, which is neither in the reference of, in the context of petitioner's representation, nor the allegations representation the petition which is not which has nothing to do with the petitioner, or his representation dated वही 3-2 वाला है ना, देखना. Full stop. Such in terms of, in any case, for the reasons as aforesaid, this petition deserves to be dismissed. Shri J.P. Jitendra Kumar Mishra Sarma, learned counsel for the petitioner, does not dispute the fact that neither the order dated 2/9/21, neither admits that the order dated the order 2/9/21 disposing of the representation of petitioner dated so and so, किस तारीख का था वो? 3/2/21 has not been annexed, has not even either been mentioned or annexed with the petition. He also admits that there is no disclosure of earlier petition number 6926 of 21 disposed of on 14/2022 in the light of the decision of the Kuladipati dated 2/9/21. Full stop. However, he submits that mere non-disclosure of these facts shall not dilute the gravity of the writ petition, as according to him, there is a mass scale irregularities committed in the matter of conduct of the examination
and issuance of the mark sheets for BSc nursing students for the year 2019, 89, 1920. One more. Hmm? In pursuance to the governor's order, FIR has been registered. उसके बाद भी कोई कार्रवाई तो बहुत पहले हो चुकी है, Stop. 2020-21 में हो चुकी हाँ सर, उसके बाद कुछ नहीं हुआ. Stop. He also submits that FIRs have been lodged after decision, the FIR has also been lodged, and EOW has also initiated the inquiry. क्लोज कर दिया और EOW ने एंटरटेन नहीं किया, FIR पेंडिंग है. अच्छा, FIR is pending. FIR क्या? Full stop. He also does not dispute that FIR has already been filed on 10/3/21 and the same is pending investigation. By the authorities of the university. Filed by the authorities of the university themselves, and the same is pending consideration. Full stop. After hearing counsel for the parties, it appears petitioner is a busybody and only to create ripple and pollute the atmosphere of the university. He has approached this court at a distance of time of more than 4 years with reference to the 2019 examinations, with suppression of material facts and non-disclosure of relevant facts. He though claims to be a retired person, he claims to have been the professor था क्या था ये? Executive member, 2 बार 3 बार. He though claimed to have been executive member of the university earlier, but and now retired. कब रिटायर हुआ ये? अच्छा, ये निकाल दो इसको, छोड़ दो इसको. क्या लिखा तुमने? Busybody and with some ulterior motive and collateral purpose has approached this court not only to create ripple but pollute the atmosphere of the university through the intervention of this court. Seeking intervention of this court under Article 206. Stop. Once his representation has already been decided, and also university officials have lodged an FIR, there was no reason justification for the petitioner to approach this court with scurrilous remarks, scurrilous allegations, and omnibus prayer. His conduct and demeanor both are condemnable. Stop. Of late, this court has experienced that indiscriminate number of PILs are being filed only to filed misusing the process of the court
to create disturbance under the pretext of public causes, which otherwise, under the pretext of camouflaged, under the pretext of public cause, which otherwise is camouflaged. Full stop. We do not approve such nature of litigations, and we disapprove with condemnation such kind of litigation, at the same time amounts to not only the misuse of process of law, but also wastage of precious time of the court. Stop. The petitioner appears to have become a court bird in the obtaining fact circumstances. Stop. He has to be stopped. Therefore, we dismiss this WP with cost of 50,000 rupees to be deposited with the principal registrar of this court within 1 week. Failure thereof, within 1 week, without failure thereof, failing which the same shall be recovered from the petitioner as an arrears of land revenue. रजिस्टर नंबर 2 का तो पहले ही था। petitioner दोनों से 50,000 रुपये होगा।